આગળ વાત કરીએ તો દ્વારકામાં નિર્જન ટાપુઓ પર પોલીસ દ્વારા કોમ્બિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે। અલગ અલગ ટાપુઓ પર એસઓજીએ ચેકિંગ હાથ ધર્યું છે, ત્યારે ગેરકાયદેસર દબાણો ન થાય તેના માટે થઈને પણ સૂચનો આપવામાં આવ્યા છે। રાજકોટ રેન્જ આઈજીના માર્ગદર્શન હેઠળ કોમ્બિંગ કરવામાં આવ્યું। ભૂતકાળમાં ટાપુઓ પર થતી દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ પર પણ નજર રાખવામાં આવી રહી છે। ટાપુઓ પરથી ગેરકાયદેસર બાંધકામો પણ દૂર કરવામાં આવ્યા છે, જેથી કરીને अनेक स्थलों पर नजर राखी शकाय। आज अंगे वधु माहिती मेळवीए। संवाददाता अनिल लाल जोड़ाया छे आपणी साथे। जी अनिल, जणावशो एसओजी द्वारा चेकिंग हाथ धरवामां आव्युं छे, कया स्थलों पर अत्यारे चेकिंग कराई रह्युं छे, शुं माहिती? जी जंखना खास वस्तीरो देवभूमि द्वारका जिल्लाना जे दरियाई विस्तारमां जे अलग अलग 21 जेटला टापुओ छे ने आ तमामे तमाम टापुओ पर जे ते वखते अगाउना वर्षो पहेला जे देश प्रवृत्तिनी जे थती हती गतिविधिओ त्यां हालमां खास करीने डिमोलेशन पर हाथ धरवामां आव्युं हतुं तंत्र द्वारा। अने देवभूमि जिल्लाना जे तमामे तमाम जे एलसीबी एसओजी तमाम डीवायएसपीओ ना दरेके दरेकनुं हालमां कोम्बिंग हाथ धरवामां आव्युं छे। अने खास करीने जे राजकोट रेन्जना आईजी छे तेमना मार्गदर्शन हेठळ जिल्लाना डीवायएसपीना चुस्त पोलीस बंदोबस्त साथेनी टीमे आज आ दरेके दरेक टापुओ पर ड्रोन केमेरानी मददथी जे छे ते हाथ चेकिंग हाथ धरवामां आव्युं हतुं। ने ज्यां गैरप्रवृत्तिओ हालमां न थाय, कोई जातना सरकारी जमीन पर गैरकायदेसर दबाणो न थाय तेनी खास काळजी राखीने हालमां तमामे तमाम जे एजन्सीओ छे पोलीसनी तेमना द्वारा कोम्बिंग करवामां आव्युं हतुं। जी जी, आभार अनिल समग्र माहिती पर।